So this is a revision of gears, how many types of gears are there, and you should all know that. And for basic small revision, spur gear, like parallel shaft, the axis are parallel, that is spur gear, helical gear, wagon pinion, bevel gear, and non-intersecting non-parallel gears. So these are the examples with them. You might have seen, most of you have seen them. Then there are types of gear. This general introduction. Most of you have taken a screenshot. If you have not taken, please take it again. Then this one is teeth in parallel to the axis of rotation. मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ या हिंदी में करूँ? सर थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर दीजिए। आते जाइएगा सर हिंदी में मिला के। और मुझे बता दीजिएगा स्क्रीनशॉट जब लेना हो आपको, और बहुत कंफर्टेबल रहें, बी कंफर्टेबल। सारे डाउट क्लियर करने के लिए हूँ मैं, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ओके सर, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं सर, ये जो पीडीएफ जो है, ये पीपीटी जो है, ये सेंड कर देते तो सर पढ़ने में आसान कर दूंगा मैं। इसमें डेली अपडेट कर रहा हूँ मैं, डेली अपडेट होता है इसमें, इसलिए अभी नहीं किया मैंने, कल कर दूंगा आपको। ओके ओके सर, है ना। ये अभी आपका मंडे को टेस्ट होना था, आपका टेस्ट नहीं हुआ था, वो ऑनलाइन टेस्ट मैंने अप्लाई कर दूंगा, मैं आपको दे दूंगा मैं, और 1 या 2 घंटे के लिए खुलेगा, उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। यूनिट 1 का। जी सर। राइट। So we are having this gears having cylindrical pitch surfaces are called cylindrical gears, जिनके अंदर भी cylindrical pitch surface होता है। pitch आप जानते हो, ये दोनों का ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में, that is pitch. And spur gears belong to a parallel shaft group and are cylindrical gears with a tooth line which is straight and parallel to the shaft. तो ये shaft के parallel में tooth line आ रही है, तो spur gear हो रहा है आपका। Then this is a parallel to axis or rotation, transmit power from one shaft to another. Parallel shaft use electrical screwdriver, oscillator, sprinkle, wind up, alarm clock, washing machine, and clothes dryer. So these are external and internal spur gears. You can see here on the left side, ये external gear है आपका, और ये internal gear है। मतलब जो shaft के ऊपर बाहर gear बने हुए हैं तो external हो गया, अंदर बने हैं तो inner gear tooth हो गया, है ना। Then we have this driver teeth and driven teeth. एक चलाता है और एक जो है उसका मोशन को पास करता है। Okay. Now this one is nomenclature of the spur gear. Most of you have taken. You have to keep it in mind. अपने दिल और दिमाग में आपको बिठाना है इसको कि क्या चीज होती है। पिच क्या होता है, एडेंडम क्या होता है, फेस क्या होता है, फिलेट क्या होता है, और pitch circle and root circle क्या होता है। You have to keep it in mind what it is and how you are using it. Okay. Space Yes, weight हो गया, face weight हो गया, ये सब आप लोग बैठा लीजिए। Now another thing is इसके जो nomenclature होता है, इसकी definitions हैं। Pitch surface क्या होता है? The surface of imaginary rolling cylinder bone that the tooth gear may be considered to replace. Then pitch circle is right section of the pitch surface. Then addendum circle is bonding the ends of the teeth in the right section of the gear. इनकी definitions या screenshot ले लीजिए और revise कर लीजिए इसको please एक बार, है ना। Then we have addendum, radial distance between the pitch circle and the addendum circle. The addendum is radial distance between the pitch circle and the root circle. Clearance difference between the addendum of one gear and addendum of the mating gear. Face of the tooth, that part of the tooth surface lying outside the pitch surface. Then flank of the tooth, the part of the tooth surface lying inside the pitch surface. Then circular thickness, the thickness of tooth measured on the pitch circle. It is the length of an arc and not the length of the straight line. Then distance between adjacent teeth measured on the pitch circle. Pitch diameter is the distance between the adjacent teeth measured on the pitch circle. Then we have backlash, the difference between the circle thickness
of one gear and 2 space of the mating gear. Okay, these are the flank of the tooth. The path of the tooth surface lying inside the pitch surface. जो pitch surface के अंदर आता है उसको flank कहते हैं. इसमें flank का दिख रहा है आपको, ये है flank. ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, इसको flank कहते हैं. और ये एरिया जो होता है इसको डेंड्रम कहते हैं. टूथ के इस पार्ट को flank कहते हैं. This one is flank. ऊपर वाले पार्ट को face कहते हैं. ठीक है. And circular thickness is the thickness of the tooth measured on the pitch circle. It is the length of an arc and not the length of a straight line. और tooth space is pitch diameter. And backlash is the difference between the circle thickness of one gear and 2 space of the mating gear. Okay, so these are the gears elements. Abhi this is an important point. What are the elements of the gear? Gear के अंदर कौन-कौन से elements आ जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है. What are the elements which comes in the gear? You see here, gear are some of the most important elements used in machinery. There are few mechanical that do not have the need to transmit power and motion. किसके बात करा दो. हेलो. Okay, the gears offer positive transmission of power. Gears range in size from small miniature instrument installations that measure in only several millimeters in diameter to huge powerful gears in turbine drives that are several meters in diameter. तो जहाँ पे भी ये gears को अपन use करते हैं power transmission के लिए, उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं. They can provide position transmission with very high angular or linear accuracy, such as used in servo mechanisms and military equipments. Gears can couple power and motion between shafts whose axes are parallel, intersecting, or skew. Gear design are standardized in accordance with the size and shape, which provides for widespread interchangeability. तो elements में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि elements of the gear में एक तो power transmission होता है, position transmission होता है, आपका couple power होता है, motion between shaft and whose axes are parallel, intersecting, or skew. Gear designs are standardized in accordance with the size and shape, which provides for widespread interchangeability. Okay. So ये आपका elements होते हैं gear के. Gears can couple power and motion between shafts whose axes are parallel, intersecting, or skew. They can provide position transmission with a very high angular or linear accuracy, such as used in servo mechanisms and military equipment. Gear design are standardized in accordance with size, shape, which provides for widespread interchangeability. Okay. Now this is a formula for circular pitch. The width of the tooth and the space measured on the pitch circle, that is pi d by n. D is pitch diameter, n is number of teeth, PD is diametral pitch, PC is width of the tooth and a space measured on the pitch circle, circular pitch. PC is pi d by n, and this diametral pitch is n by d, opposite of that. Number of teeth divided by pitch diameter. So we can write this n modulus d upon n. So we can write this circular pitch is pi into m. These are very common formula which can be utilized, which can be used there. So you all have to use these formulas. Okay, you have to remember this formula. Please take a screenshot if necessary. Then we have the velocity ratio of the gear, an important factor. What is the velocity ratio of the gear? Is the diameter of the wheel and speed of the wheel and angular velocity. That is W2 by W1 is equal to N2 by N1 is equal to D1 by D2.
If you see that angular velocities, compare them. N is the speed of the wheel and omega is the angular velocity and d is the diameter of the wheel. If you compare these angular velocities or RPMs, they are in equal proportion with this diameters of the, they are in opposite in relation with the diameter of the gear. So this is the velocity ratio of the gear, which is very important. It is when for varying torque and varying speed we use this. Sorry. So this is velocity ratio of the gear drive. Okay. Now we have this helical gears. You might have seen this helical gear is, you can see this gears are cut in this specific manner. So helical gears are used with their parallel shafts similar to spur gears and are cylindrical gears with the winding tooth lines. The tooth lines have been winding and they have a better teeth meshing. These spur gears, these they have a better teeth meshing than spur gears and have a superior quietness and can transmit higher loads, making them suitable for high speed application. Because क्या करा अपन ने, ये जो एरिया है ना, ये टूथ का जो फेस और फ्लैंक का एरिया है, इस एरिया को अपन ने बढ़ा दिया ऐसे टिल्ट करके. जब एरिया बढ़ गया तो इससे क्या होता है कि बहुत क्वाइट रहते हैं, ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर लेते हैं, ज्यादा आपका वाइंडिंग और टूथ लाइंस मैशिंग प्रॉपर होती है स्पर गियर से एंड हैव सुपीरियर क्वाइटनेस, हायर लोड ले सकते हैं आपके. When using helical gears, they create thrust force in the axial direction, necessitating the use of thrust bearing. Helical gears come with right hand and left hand, so it's requiring opposite hand gears for a meshing gear. राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्शन दे देते हैं तो उसके हिसाब से मैशिंग गियर बना देते हैं. ये मैशिंग गियर बना दिया है. इस स्केच ऑफ हेलिकल गियर, यू कैन सी दिस हेलिकल गियर. स्पर गियर जैसे ही है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया अपन ने. ओके, वी हैव चेंज द डायरेक्शंस. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ हेलिकल गियर जो अपन यूज करते हैं. इसका एरिया बढ़ाने की वजह से इसकी मैशिंग हो जाती है और हायर पावर ट्रांसफर हो जाता है कंपेयर टू स्पर गियर्स. दिस इज द थिंग, ओनली दिस इज द फैक्टर व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड, राइट. Then applications of helical gear. The teeth on helical gears are cut at an angle to the face of the gear. This gradual engagement makes helical gear operate much more smoothly and quietly than spur gear. One interesting thing about the helical gear is that if the angles of the gear teeth are correct, they can be mounted on perpendicular shaft. अगर इनके एंगल प्रॉपर हैं तो हेलिकल गियर को आप परपेंडिकुलर शाफ्ट पर माउंट कर सकते हैं. If provided if the angles are cut accurately and in proper shape and proper manner. Okay, adjusting the rotation angle by 90 degrees. So these are the applications of the helical gear which we are using it. Everyone should. हाँ जी. What? 45 डिग्री होगा ना सर शायद. क्या 45 डिग्री में होगा? एंगल सर इसके. हेलिकल गियर डिग्री जो उसका तीत होता है सर, कितना डिग्री पे होता है सर? वो आप मैशिंग के हिसाब से डिग्री का एंगल कहाँ से ले रहे हो आप जो मैशिंग लेंगे अपन? सर हाँ जी सर, फिर से एक बार बताइए. बता रहा हूँ आपको मैं.
मिनट है ना। ये देखिए, इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हेलिकल गियर इज दैट if the angles of the gear theta correct, they can be mounted on perpendicular shafts, adjusting the rotation angle by 90 degree. जो इनका ये 90 डिग्री पे कर लिया, देखो एक शाफ्ट ये आ रहा है और एक शाफ्ट ऐसा जा रहा है आपका, तो दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे अगर आपने प्रॉपर इनकी गियर की कटिंग करी है तो ये गियर और ये गियर मैश हो जाएंगे 90 डिग्री के ऊपर भी आप इनको माउंट कर सकते हैं। नॉर्मली होता नहीं है 90 डिग्री पे, लेकिन अगर आपने गियर मैशिंग प्रॉपर हुई है तो ऐसा इस टाइप का गियर आप रख सकते हो उसको माउंटेन गियर एंगल हेलिकल गियर ऑपरेट मच स्मूथली एंड क्वाइटली। इससे पहले वाला आपने देखो इसके अंदर ये थोड़ा सा ऐसा एंगल दिया था, स्ट्रेट दिया हुआ था, और ये 90 डिग्री पे कर दिए, मैशिंग 90 डिग्री पे हो रही है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे मैश हो रहा है, तो इट कैन बी माउंटेड एट 90 डिग्री आल्सो, प्रॉपर मैशिंग इज बीन डन। ये बताना चाह रहे हैं एंगल इसके अंदर स्क्यू कर दिया, ऐसा शेप दिया है कि ये और ये मैश हो रहे हैं दोनों गियर्स, और शाफ्ट जो है 90 डिग्री। सर माइक क्लियर नहीं आ रहा है। माइक क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा यस सर। ठीक है, देखो इसके अंदर एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये एक एंगल आ रहा है आपका एक्सिस का, और एक ये एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये एक्सिस, तो ये कुछ एंगल है, दिस नॉट 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री 70 डिग्री होगा दोनों के बीच में एंगल, अगर आप देखोगे है कि नहीं है? जी सर। है ना, तो ये ऐसा दिख रहा है आपका। अब इसमें मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको अगर मैं एंगल बनाऊं इसका, तो व्हाट विल बी द दिस, ये कैसा जा रहा है आपका, और ये कैसे जा रहा है, ये एंगल ऐसा आ रहा है, इट कैन बी 90 डिग्री, ये आपको फिगर में ऐसा दिख रहा है, एंड दिस कैन बी 90 डिग्री आल्सो। तो इन दोनों का एंगल अगर ये ऐसा खड़ा हुआ है आपको, और ये 90 डिग्री हो सकता है, ये स्ट्रेट 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 जा रहा है ये वाला, और ये ऊपर परपेंडिकुलर है, फोटो में ऐसा दिख रहा है, 3D व्यू नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, यू कैन सी दिस 3D व्यू, सो दिस कैन बी 90 डिग्री आल्सो अगर प्रॉपर कटिंग होगी, तो ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, बात आ रही समझ में? हेलो यस सर। अविनाश, प्रदीप, समझ में आ रही है? जी सर। यस जी सर। दीपेश लोधी, पंकज, इज इट क्लियर कि 90 डिग्री भी हो सकता है इनका एक्सेस हेलिकल गियर का, ठीक है। अभी गियर रैक एंड पिनियन होता है, इसके बारे में देखो आप, सेम साइज एंड शेप टीथ हैं आपके, cut at equal distance along a flat surface or a straight rod is called a gear rack. The gear rack is a cylindrical gear with a radius of the pitch cylindrical being infinite. By meshing with a cylindrical gear of pinion, it converts rotational motion into linear motion. बोलिए शिवम। सर जी जी, मेरा एक सवाल है सर कि हेलिकल गियर सर कहाँ यूज होता है सर, व्हीकल में होता है या सर? कौन सा गियर? हेलो, हाँ कौन सा गियर? हेलिकल गियर। हेलिकल गियर, हेलिकल गियर बहुत जगह, यस सर, वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, जहाँ पे कूलिंग होनी है, जहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा होनी है, तो उस जगह पर अपन हर जगह यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। व्हीकल के अंदर बहुत सारे गियर लगे होते हैं, हर तरह के गियर लगे होते हैं आपके, आपका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में भी देख लो आप कितने टाइप के गियर्स लगे रहते हैं, रैक एंड पिनियन रहता है आपका, यस सर, है ना, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील भी होता है आपका, और पूरे ऑटोमोबाइल में इतने गियर्स लगे रहते हैं जगह जगह पे, जैसी आपकी एप्लीकेशन हो उसके हिसाब से लगा देते हैं। और शाफ्ट कहाँ से आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, इंक्लाइंड आ रहा है, पहिए में बीवल गियर लगा रहता है आपका पावर ट्रांसमिशन के लिए, मोटर और पहिए के अंदर। देन आपका गियर्स जो आप चेंज करते हो गियर बॉक्स के अंदर, स्पर गियर ज्यादा रहते हैं, और ये वाले हेलिकल गियर भी रहते हैं,
क्योंकि वो मैक्सिमम यूज होता है आपका। होता है कि नहीं होता? जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी 20 साल, कम से कम 15 साल की लाइफ होती है, तो वी आर यूजिंग दैट गियर्स। यस सर, ठीक है। ठीक है। नाउ गियर रैक इज a cylindrical gear with the radius of the pitch cylinder being infinite. By meshing with a cylindrical gear pinion, it converts rotational motion into linear motion. Gear racks can be broadly divided into straight tooth racks and helical tooth racks, but both have straight tooth lines. By machining the ends of the gear rack, it is possible to connect gear racks end to end. Okay, rack and pinion gears are used to convert rotation from the pinion into linear motion. A perfect example of this is steering system in a many cars. Steering system आप देखोगे तो आप पहिया घुमाते हो, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो तो पहिया अपना घूम जाता है। वहां पर रैक और पिनियन यूज करते हैं अपन। तो perfect example of this is a steering system on many cars. Rack and pinion gears are used to convert rotation from pinion into linear motion of the rack. Okay, gear rack is a cylindrical gear with the radius of the pitch cylinder being infinite. By meshing with a cylindrical gear pinion, it converts rotational motion into linear motion. Okay, then now this is a herringbone gear. You are looking at herringbone gears. Look into it to avoid axial thrust. Two helical gears of opposite hand can be mounted side by side to cancel resulting thrust forces. Herringbone gears are mostly used on heavy machinery. आपने क्या किया, दो गियर्स को कट किया, एक का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब एक ही गियर का अगर ऐसे डायरेक्शन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके अपोजिट डायरेक्शन से चिपका दिए, तो दिस बिकम्स herringbone gears। ठीक है। अब एक्सियल थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए अपन दो हेलिकल गियर्स को अपोजिट डायरेक्शन में कट करके ज्वाइन कर दिया, इट बिकम्स herringbone gears। ठीक है। अब इनका यूज क्या था? herringbone gears आर मोस्टली यूज ऑन हेवी मशीनरी। हेवी मशीनरी में यूज करते हैं ताकि आपका पावर ट्रांसमिशन इजी हो जाए, तो herringbone gears का अपन यूज करते हैं वहां पर। अब इनको भी आप देख सकते हो, हेवी मशीनरी कहाँ पे होती है? हेवी मशीनरी आपका टरबाइन में होती है, पावर ट्रांसमिशन में होता है, इन जगह पे अपन herringbone gears यूज कर सकते हैं। And this one is bevel gears are useful when the direction of the shaft rotation needs to be changed. They are usually mounted on shafts that are 90 degrees apart, but can be designed to work at other angles as well. The teeth on bevel gears can be straight, spiral, or half-wide. Locomotives, marine applications, automobiles, printing, presses, cooling towers, power plants, steel plants, etc. तो बीविल गियर्स को आप लोगों ने देखा है कहाँ पे यूज करते हैं अपन। बीविल गियर जो होता है, बीविल गियर आर यूजफुल when the direction of the shaft rotation needs to be changed. They are usually mounted on shafts that are 90 degrees apart, but can be designed to work at other angles as well. The teeth on the bevel gears can be straight, spiral, or hypoid. Locomotives, marine application, automobiles, printing, presses, cooling towers, power plant, steel plants, railway track inspection machines, etc. So here we are using this.
तो मैरीन इंजन देखे होंगे आपने, एरोप्लेन के अंदर होता है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर देखो आप, हेलीकॉप्टर के अंदर जो शाफ्ट लगा रहता है जो उसको उठाता है, तो उसमें जो गियर लगा होता है वो देखा आपने कैसा गियर होता होगा, जो कि वो शाफ्ट जो है वर्टिकल फोर्सेस भी कर रहा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस दोनों को बियर करता है, लोड भी उठा रहा है, टेंसाइल फोर्स भी उठा रहा है, कितना पावरफुल शाफ्ट होता है। और उसके अंदर जो गियर है वो हेरिंगबोन ही प्रेफर करते हैं हेलीकॉप्टर शाफ्ट के अंदर। Hope so it is clear. Now these are wheel gears. Wheel gears को आप लोगों ने देखा, जीप के नीचे जो होता है ना गियर, देखा है आप लोगों ने? जीप के नीचे जो गियर्स लगे रहते हैं उनको wheel gears कहते हैं। We use them normally. Okay. $90 डिग्री दिख रहा है आपको ये शाफ्ट? इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शाफ्ट आपको 90 डिग्री दिखेगा। This one is wheel gear. Okay. This one is wheel gear. You can see this. This is in this figure. This is 90 degree. Okay. So it has been used here for power transmission. Then we have spiral gears. Look, this has been cut at 90 degree. These are spiral gears. Spiral gears are bevel gears with curved lines. Due to higher tooth contact ratio, they are superior to straight bevel gears in efficiency, strength, vibration, noise. On the other hand, they are more difficult to produce also because the teeth are curved. They cause such forces in the axial direction. Within the spiral bevel gears, the one with a zero twisting angle is called zero bevel gear. The one with a zero twisting angle is called zero bevel gears. Hope this is clear to you all. Yes sir. अब मेरा टाइम जरा खत्म होता जा रहा है, अपन इसके गियर मैन्युफैक्चर अगले क्लास में कर लेंगे। सर अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ जी, यस सर, अटेंडेंस ले लीजिए सर। हाँ मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस। यस सर।